Knowledge at Horizontal Watch। मैं अब्दुल मजीद बानिया आपको खुशामदीद कहता है। तो दोस्तों, इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि हम अपने इन वीडियोस में किस तरह से काम करेंगे। इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। हमने डिस्कस किया था लेटर सी के साउंड्स को। तो लेटर सी से इंग्लिश में 4 साउंड्स लेने का प्रोसेस है। 4 sounds are created in general, and these 4 sounds are discussed there. Here only the solution for that। उन 4 आवाज़ों में कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें ये 4 आवाज़ें थी, तो नोट कीजिएगा। If letter C is followed by I, E, Y, some often अगर C के बाद आने वाला लेटर E, I या Y हो तो ये सा साउंड प्रोड्यूस करेगा। And if letter C is followed by any other vowel or consonant, it will create the sound of K। ये K साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि हमने कॉल, कैलकुलेटर, क्राउन की बात करें। Next interesting thing is letter C with letter H। It in general produces the sound as ch, but in machine this letter produces the sound of sh। Keep it in mind, exceptions are there. Nothing in this universe without exceptions, only God। Let us see. If is followed by I, A, R, I with any other vowel letter in combination, it produces sound sh, special, facial। Next thing that we discussed in earlier video, that was one word and its 3 uses. Word cuts. In first sentence, she cuts apples. The word is at verb place, proper verb place, so it plays a role, a function of verb, and its meaning are काटती है। पहले सेंटेंस में ये प्रॉपर वर्ब की जगह पर है, प्रॉपर वर्ब ऑर्डर में है, प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल हो रहा है, इसके बाद नाउन आ रहा है, तो इससे वर्ब के पूरे माने लिए काटती है। दूसरे सेंटेंस में she has cuts on her hand। इसके कॉम्बिनेशन ऐसा है, पोजीशन वर्ड है, पहले has, इसके बाद cuts है, फिर प्रपोजिशन है on। तो ये क्लियरली मेंशन हो रहा कि ये यहाँ पर एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा। थर्ड सेंटेंस में she cuts jokes, सेम कॉम्बिनेशन है पहले सेंटेंस की तरह, बट दैट इज proverbial use in specific meaning, so it is different from that। ये उससे मुख्तलिफ है। ये पॉइंट्स थे जो पहले
इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने उठाए थे। आज की फूड फॉर थॉट ये है लेटर डी। लेटर डी कहाँ पर कौन से साउंड प्रोड्यूस करता है, इसको लेकर के चलेंगे, तो हमसे जुड़े रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। ओके, बाय।